अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा हम पढ़ रहे थे कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट और डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बाय एडिशन मेथड। तो आज की जो फंक्शन है दैट इज़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू tan of x, means we will try to learn how to find derivative of tan x and what is the derivative of tan x। ठीक है, तो लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। एक ही मेथड है एफ ऑफ एक्स प्लस एच, जो हम इंक्रीमेंट देते हैं बेटा दैट इज tan ऑफ एक्स प्लस एच। ठीक है, लेट इट बी इक्वेशन सेकेंड। नाउ second minus first, means subtracting equations first from equation second, we'll write f of x plus h minus f of x is equal to tan of x plus h माइनस tan of x। देखिए बेटा, जब हमने साइन और कॉस की डिफ्रेंसिएशन की थी, उनमें साइन और कॉस की जो एडिशनल मेथड से हमने डेरिवेटिव निकाला था कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स। उस वक्त हमने साइन ए माइनस साइन बी या कॉस ए माइनस कॉस बी की फार्मूला यूज़ की थी। यहाँ पे क्या बन रहा है बेटा, tan ए माइनस tan बी। लेकिन tan ए माइनस tan बी की हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, जो आर एच एस है आर जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वी नो दैट tan फंक्शन is a quotient of sine and cos, or simply you can say this tan of x plus h can be written as sine of x plus h divided by cos of x plus h। we know that tan theta is equal to sin theta by cos theta minus sin of x divided by cos of x। ठीक है, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, तो बेटा यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं साइन ऑफ x plus h into cos of x minus sin of x into cos of x plus h whole divided by cos of x plus h into cos of x। ठीक है, जो न्यूमरेटर में फार्मूला है बेटा दैट इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, cos of x plus h माइनस साइन ऑफ x लिख सकते हैं। तो सो इट इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, सो लिख सकते हैं बेटा दिस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, दिस इज द फार्मूला फॉर साइन ऑफ ए माइनस बी, दिस इज द फार्मूला फॉर साइन ऑफ ए माइनस बी। सो लिख सकते बेटा ए क्या है यहाँ पे x प्लस एच एंड बी क्या है x डिवाइड बाय cos ऑफ x प्लस एच इंटू cos ऑफ x। ठीक है, इंटू cos ऑफ x। तो क्या आएगा यहाँ पे माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसल, इट विल बी वी कैन राइट हियर एफ ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ h divided by cos of x plus h into cos of x। ठीक है, now dividing both sides by h we can write f of x plus h minus f of x divided by h is equal to sin of h divided by h into cos of x plus h into cos of x। now taking limit h tends to 0 on both sides, we can write limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x divided by h is equal to limit h tends to 0 sin of h divided by cos of x plus h into cos of x into this h into h। ठीक है, तो बेटा हम लिख सकते हैं इस फंक्शन को ऐसे, यहाँ पे लिखूँगा मैं हियर लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h minus f of x divided by h, we can write it as it is f dash x।
because we know that limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x divided by h is f dash x. तो RHS में क्या आएगा, लिमिट h tends to 0 sin h divided by cos of x plus h into cos of x into, so it is limit h tends to 0 sin of h divided by cos of x plus h into cos of x into h. क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि f dash x क्या आएगा बेटा, जो लिमिट है, लिमिट ऑफ ए कोशेंट इज कोशेंट ऑफ लिमिट्स, वी कैन राइट लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h by h, लिमिट h sin of h divided by h into limit h tends to 0 1 divided by cos of x plus h into cos of x. ठीक है, सो लिख सकते हैं बेटा हम यहाँ पे f dash x क्या आएगा, इज अ फंडामेंटल लिमिट h tends to 0 sin h by h, or it is limit theta tends to 0 sin theta by theta, it is always equal to 1. And it is limit h tends to 0 1 divided by cos of x plus h, it is cos of x plus 0, it is 1 by cos of x into cos of x, 1 by cos square x, which is equal to sec square, x. So derivative of this tan x now, therefore derivative of tan x, that is f dash x, is equal to sec square x. Similarly you can find sec x का मैंने आपको मटेरियल भेजा है कि कैसे आप करोगे उसमें. Similarly you can find that अगर आपके पास एक फंक्शन है f of x is equal to cosec x, you can write f dash x, you can find f dash x is equal to minus cosec x cot x. Similarly you can find अगर आपके पास एक फंक्शन है f of x is equal to cot x, so you can write f dash x is equal to minus cosec square x. ठीक है, and derivative of sec x is sec x tan x. तो अभी तक हमने चारों फंक्शंस लिए हैं बेटा. now we know that derivative of sin x, अगर आपके पास एक फंक्शन है derivative of sin x with respect to x, it is cos x, derivative of cos x with respect to x, it is minus sin x, derivative of tan x with respect to x, it is sec square x, derivative of sec x with respect to x, it is sec x, tan x, derivative of cosec x with respect to x is minus cosec x cot x, and derivative of cot x with respect to x is equal to minus cosec square x. So this is the different derivatives of all the 6 trigonometric ratios, all the 6 trigonometric functions. Now with the help of these you can solve the questions of the exercise. ठीक है, अब बेटा यहाँ पे एक फंक्शन है that is exponential function. अगर आपके पास एक फंक्शन है f of x is equal to e raised power x, what is the derivative of this e raised power x? Let it be equation first. What is f of x plus h? It is e raised power x plus h. Equation second. Now second minus first. F of x plus h minus f of x is equal to e raised power x plus h minus e raised power x. Dividing both sides by h, we can write f of x plus h minus f of x divided by h is equal to e raised power x plus h minus e raised power x divided by h. ठीक है, so now taking limit h tends to 0, it is f of x plus h minus f of x divided by h is equal to, now e raised power x plus h minus e raised power x, we can take e raised power x, limit h tends to 0
we can take e raised power x common. It will be e raised power h minus 1 divided by h. Now this e raised power x, it is free from this h, so it is here. We will treat it as constant, so we can write e raised power x into limit h tends to 0 e raised power h minus 1 divided by h, which is equal to e raised power x into 1, because this one, limit h tends to 0 e raised power h minus 1 divided by h, is a fundamental limit and it is equal to 1. This is basically the case limit x tends to 0 e raised power x minus 1 divided by x. This is the fundamental limit and its value is equal to 1. Therefore this limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x divided by h, it is basically f dash x. Therefore f dash x is equal to e raised power x. So derivative of e raised power x is always equal to e raised power x. ठीक है. सो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की जब भी आप डिफरेंशिएशन करोगे तो यू हैव टू यूज हियर दिस e raised power x. डेरिवेटिव ऑफ e raised power x इज ऑलवेज e raised power x इनटू डेरिवेटिव ऑफ पावर. ठीक है. तो आज इतना ही. कल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप सीखोगे बेटा कि डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथम फंक्शंस. थैंक यू.